Hello, welcome to my channel. And today I come here one local restaurant called Maharaja Kadai. It's a Pakistani cuisine and Indian cuisine. So let's go inside. I'll take the tour. Let's go. अच्छा देखिए सर, ये यहाँ पे नान बन रहा है सर। आप ये नान बना रहे हैं भाई, क्या नाम है सर आपका? मुबशिर भाई। अच्छा, ये आप कैसे इस बनाते हैं तंदूर? आटा वगैरह गूंद के रात को रखते हैं? अच्छा रात, अच्छा रात को रख के सुबह, या बल्कि माइक में बोले ऐसे ही आप बोले, मैं पकड़ाऊँ? हाँ, रात कैसे को रख बनाते के हैं? रखते बना जी के जी फिर जी जी। सुबह में निकालते फिर रेडी करते फिर बनाते हम लोग। अच्छा अच्छा, ये दिखाएं ज़रा सर हमारे व्यूवर्स को, ये कैसे तंदूर में। अच्छा, ये भी पक रही है, ठीक है ना? जब ये क्या लाइट ब्राउन होती है जब निकालते हैं? जो लाइट ब्राउन होती है जब अच्छा, निकालते और ये कौन सी ब्रेड है? वाइट वाइट मील? वाइट है ब्रेड। ये वाइट ब्रेड है। अच्छा, और इसको कितना टाइम आप तंदूर के अंदर रखते हैं? कम से कम 3 से 4 मिनट रखते हैं हम। 3 से 4 मिनट, हाँ। हाँ। और इसके आटे के डो में भी और मिलाते हैं दूध वगैरह, हाँ, दूध नमक? मिलाते हैं, नमक दही मिलाते हैं। दूध नमक मिलाते हैं। अच्छा, तो इसका क्या राज है अपना? सर आपने नाम क्या बताया? सॉरी भूल गया। मुबशिर। मुबशिर भाई, इसका जो इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है तो इसका क्या क्या और तरीका है रात क्या? रात में गूंद के रखना है उसको। रात भर 24 आवर्स रखना पड़ेगा अपन को तो। अच्छा, 24 आवर्स रखना हाँ, पड़ेगा तो और उसके उसको कवर भी करना कवर पड़ेगा? भी करना पड़ेगा, फोटो में अच्छा रखना। इसके सुबह निकालेंगे तो सॉफ्ट आएगी रोटी। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर कोई जैसे लेडीज़ वगैरह घर में तंदूर में बनाना चाहे, घर में बनाना चाहे इस तरह की रोटी, जी। क्या तरीका बन सकती है? हाँ, बन जाएंगे। तंदूर होना चाहिए बस। तंदूर में ही बनेगी ये तंदूर रोटी? में ही बनेगी ये। तंदूर के बगैर इस तरह की रोटी नहीं नहीं बनेगी है? बनेगी सर। अच्छा, तो देखें देखें व्यूअर्स, ये रोटी इन्होंने बनाई है गरम गरम तंदूर से लेके, ये बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी। ठीक है, तो ये करी के साथ, किसी भी करी के साथ आप खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी होती है। ओके व्यूअर्स, दिस इज अरशद भाई, ही इज़ द ओनर ऑफ द महाराजा कढ़ाई। ओके, ये अरशद भाई महाराजा कढ़ाई के ओनर हैं। और अरशद भाई, ये जी अलग शुगर ठीक ठाक। आप बताइए सर, अभी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये डिश? हमने कराची स्टाइल की बिरयानी बनाई है ओके। और अभी इसकी मिक्सिंग चल रही है क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। जी जी तो बिल्कुल। हम एवरीथिंग जो तैयार रख रहे हैं। तो अगर पास 5 पे हमारा बफे बाहर लग जाता है। ओके। तो ये बिरयानी है जो कि मैन कोर्स में जाती है।
और स्नैक्स के अंदर हमारे पास जो है मिक्स पकोड़े और हैं। ये अरशद भाई ये चिकन बिरयानी है ये या कौन? चिकन, ये चिकन बिरयानी है। दिस द चिकन ये बिरयानी, चिकन ओके बिरयानी है, अभी थोड़ा सा दम और लग रहा है इसमें। ओके, इज गोइंग टू बी रेडी इन 10 मिनट्स टाइम। इन 10 मिनट्स, ओके। ये हमारे पास पालक के पकोड़े बन रहे हैं। ये पालक ये के आलू के पकौड़े, पकोड़े बन गए हैं। ये पालक के पकौड़े आपके, ओके। अभी इसमें प्याज के पकोड़े बनेंगे। और ये कौन सा आपने पकौड़े ये बताए? आलू के पकोड़े हैं। ओके, ये पालक के हैं। ये पालक के हैं, ठीक अभी है। स्प्रिंग रोल और समोसे यहाँ फ्राई होंगे। ओके, यहाँ पे एयर फ्रायर में, चना ओके चाट हमारी रेडी टू गो है। ओके, द चना चाट। और दही बूंदी And this chana chart should buy white chickpeas वाइट चिकपीस and we mix with the yogurt. मिक्स विद द योगर्ट एंड कैमरिन एंड गेट्स चटनी, Tamarind बिट ऑफ chutney. योगर्ट एंड ग्रीन चिली सॉस ऑन टॉप। Okay, all right, okay. तो अरशद भाई आपकी जो सिग्नेचर डिश है इस रेस्टोरेंट की, कौन सी सिग्नेचर डिश है? सिग्नेचर डिश हमारी जो है यहाँ पे कढ़ाई बहुत मशहूर है। अच्छा जैसे कि आपसे नाम से भी अंदाजा हो जी, रहा जी, होगा कि महाराजा हमारा नाम कढ़ाई। जो है महाराजा कढ़ाई, जी, वो इसीलिए रखा गया है कि कढ़ाई में हम लोग काफ़ी स्पेशलाइज हैं। चाहे चिकन कढ़ाई हो या मटन कढ़ाई हो, नॉर्मली हम सर्व के हिसाब से नहीं सर्व करते, ओके हम किलो के हिसाब से सर्व करते हैं। जब भी आपको हो आप हमें हाफ एन आवर का टाइम दीजिए, जी, बताइए कि 1 किलो चाहिए या हाफ किलो या 2 किलो, ओके तो उसके हिसाब से हम सर्व करते हैं। तो वो हमारी सिग्नेचर डिश में आती है। दूसरा हमारा बारबेक्यू बहुत पॉपुलर है, जिसे अच्छा। यहाँ आमतौर पे तंदूरी कहा जाता है। अच्छा, ये हम उसे बारबेक्यू बारबेक्यू कहते हैं, ये आप जो यहाँ कि सेटअप क्योंकि लगाते अभी हैं, रमजान है, हमने इसकी वजह से इसे बंद किया हुआ है, ओके वरना ये हमारा लगता है और ये चारकोल पे ही होता है। और अच्छा पाकिस्तानी और स्पेशली कराची के स्टाइल का जो है ये चिकन टिक्के होते हैं। ठीक है। और ये जो आपने बताया ये सिग्नेचर आपकी ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, ये चिकन कढ़ाई, ये किसी का ऑर्डर रखा हुआ है, जब वो आएंगे तो उनको सर्व कर दिया जाएगा। ओके। और ये भी चिकन ये कढ़ाई, भी ऑर्डर का ही है। अभी Order का। जैसे अफ्तार के टाइम करीब आएगा, लोग अपना ऑर्डर पिक करना शुरू ओके। कर और देंगे। ये निहारी के लिए आपने मैरिनेट किया हुआ है ये गोश्त हमने निहारी के लिए मैरिनेट नहीं किया, मीट हमने साइड पे निकाल के रखा के? है। मीट तैयार है ये? हाँ, जो कहते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा मीट चाहिए उसे इसमें से दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो अच्छा, और अच्छा भाई ये साहब कोई अगर यहाँ आना चाहे तो इस रेस्टोरेंट का क्या एड्रेस है सिडनी में? इसका एड्रेस है 98 केओर्स रोड पेस्ट्रो, 98 केओर्स रोड CAHORS केओर्स रोड पेस्ट्रो। पेस्ट्रो, It's close to the Bankstown and Reesby. रिजबी, ओके, ऑलराइट।
chicken. Okay, viewers, so we're going to taste all the dishes here. That's fish fillet, the fried fish is called the basa fillet, and this one, what we showed the chicken kadai, and this one has mentioned this biryani, it's Karachi biryani. Okay, and this one is beef nihari, look very yummy and tasty. All right, and we're going to try one by one. Very first, I'll try the chicken biryani here. Looks very yummy. And I tell you, the taste. Okay, that's my bite. Very yummy, this chicken biryani. Very nice. Meat, the chicken is very soft and tender, you know. And rice mixed with the spice, you know. Nice aroma, fragrance, all the spices, curries, and rice together. I'm gonna take one more bite. Very nice taste. Very beautiful. I'll try this fried fish. Put some, I think, lemon on it. On top of the fish, you know. Taking this bite. Very crispy, you know. And lemon on top. It's make more tasty. And that's our chicken kadai. I taste this one bite with naan. Gravy looks very tasty, you know, it's everything mixed with spice and chicken. This one is also very tasty, you know. As Arshad Bhai mentioned already, this is a signature dish of his restaurant. So I recommend you must try this chicken kadai and biryani and fish. And I'm going to taste you beef nihari. That's curry, actually special curry we call nihari, mixed with the gravy, you know, and the big chunk of the meat, and this meat is actually very soft and very tender. I think they cooked a few hours on flame, you know. So I take a bite with this naan. This is my bite here. Awesome. Very tasty as well, you know. No doubt all these dishes, you know, fish, chicken kadai, biryani, beef nihari, top class. It's very tasty, you know. I really like it. You guys must try all these dishes when you go there. So the viewers, this is the end of the video, and hopefully you like and you enjoy already this video. And if you like it, so please share, like and comment on my video and press the icon button, so you will notify our all new videos. So till then, bye. Assalamu alaikum.